आगे बढ़ते हैं। यूके में बनाई गई अवार्ड याफ्ता फीचर इंग्लिश फिल्म ओनली लव मैटर्स, डायरेक्टर कामरान कुरैशी, प्रोड्यूसर डॉक्टर इरम कुरैशी और उनकी जो अदाकारा थी सारा फराज, उनसे हमने बात की थी। अब ये फिल्म किस बारे में है और क्या गुफ्तगू रही आपको दिखाते हैं। जनाब आली, हम शुरुआत करते हैं। प्रोड्यूसर हमारे साथ डॉक्टर इरम कुरैशी मौजूद हैं, इसके अलावा डायरेक्टर कामरान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो बड़ा एक अहम किरदार किया इसमें इस फिल्म सारा फराज, शी इज़ जॉइनिंग अस एज वेल। तो आगाज़ करते हैं सेगमेंट का। एंड डॉक्टर साहब, विथ योर रिस्पेक्ट, लेडीज़ फर्स्ट एज ऑलवेज, राइट ऑन। तो मैम, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। एंड मैं देख रहा हूँ इस पे जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हो, लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही होगी, इट्स द लोकेशन। मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि आप मुझे फ़िल्म के बारे में बताएं, ये जो लोकेशन है और ख़ास तौर पर मेरी बड़ी फेवरेट है, दैट थरी लोकेशन, वो ये कौन सी लोकेशन थी और मज़ीद कौन कौन सी लोकेशन पर आपने शूट किया है मैम, प्लीज़ गो ऑन। हमने इसको यूके में और ग्रेट इंडियन डेजर्ट में शूट किया है, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर 6 विलेजेस हैं, थर्ड डेजर्ट भी कहते हैं उसको, वहाँ पे शूट किया। यूके में जो शूट किया हमने, एक इंग्लिश मूवी थी द थियरी ऑफ एवरीथिंग, जो स्टीवन हॉकिंस पे बनाई गई थी। उसमें जो इंग्लैंड का ओल्डेस्ट पब है, वहाँ पे जाकर हमने उसको शूट किया। उसके अलावा हमने रिचमंड में शूट किया, लंदन की डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया, बीकन्सफील्ड में, और पाकिस्तान में जैसे कि मैंने बताया डेजर्ट में हमने शूट किया। तो वो वहाँ का कल्चर, बहुत कलरफुल कल्चर हमने उसमें दिखाया। वो हट्स और सारा कुछ, उनके कल्चरल ड्रेसेस एंड एवरीथिंग। सो ओवर 40 लोकेशंस पे हमने इसको शूट किया है। वाह। और वो जैसे मैम ने कहा ना कि द कलरफुल कल्चर, डॉक्टर साहब अब ज़रा मुझे बताएं, ये फिल्म ओनली लव मैटर्स, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, मोहब्बत ही है जिसको कहते हैं उर्दू में मोहब्बत फातह आलम। क्या कॉन्सेप्ट है इस मूवी का और इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्यों आपने इसी को इस मौजू को चुना? कोई तहरीक होती है, कोई मोटिव होता है इसी टॉपिक को चूज़ करना? तो ज़रा मुझे बताइए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये आइडिया तो बहुत सालों पहले यहीं से शुरू हुआ। माँ एक प्रोग्राम हम करते थे, एरियल मदर्स, यस, सानिया सईद होस्ट करती थी उसे, 3 साल वो शो चला मुख्तलिफ चैनल्स पे। उसके बाद हमने सोचा माँ और ममता एक सीरीज़ बनाते हैं, फिल्म सीरीज़, और उसमें हम एक मदर की स्टोरी लेकर आए थे। और वो इंडस टेलीफिल्म फेस्टिवल हो रहा था उस ज़माने में, वहाँ पे हमने वो फिल्म सबमिट की, पहला इनाम लिया हमने, फर्स्ट पोजीशन ली उस फिल्म पे। कासिफ वाजिद जो है वो एक मदर का कैरेक्टर किया, सोहेल असगर ने किया था, नबील थे उसके अंदर। उसके बाद हमने एक सीरीज़ बनाई मूरत के नाम से, और उसमें आबिद अली साहब जो हैं वो इस मदर का कैरेक्टर किया। इस दफ़ा जो है इस फिल्म में मदर का कैरेक्टर जो है वो सारा फराज ने किया है। यंगर वर्जन सारा फराज ने किया है एंड ओल्डर वर्जन जो है वो कायनाज ने किया है। दोनों यूके बेस्ड एक्ट्रेसेस हैं, कमाल एक्ट्रेस हैं, वेरी गुड एक्ट्रेसेस। ये एक माँ और बेटी की कहानी है जिसमें माँ जो है वो ये थर्ड डेजर्ट में पैदा होती है और वहाँ से स्लेवरी के तौर पे हम आज भी है कि गांव से हम बच्चे बुला के घरों में काम कराते हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, और इसी तरह यूके में भी है। तो इस बच्चे को, इसका जो बाप है वो अदनान जलानी ने वो कैरेक्टर किया है। वो बच्चा जो है वो यूके भेज दिया जाता है कुछ पैसों के एवज, और जो कि ये सारा फराज डिड दैट कैरेक्टर, एंड सारा फराज मैनेज टू escape from that house. All right. And then she carry on with her own struggle. She married to a man, and then उसका नाम जॉर्ज सिम्पसन है जिसने कैरेक्टर किया है मूवी में, डैरन नाम है उस बंदे का। और फिर ये एक बच्ची अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरह की बायोलॉजिकल पोजीशन थी सारा फराज की, जो कैरेक्टर किया था सैम का, उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया, एक गोरी बच्ची जिसका नाम स्टेफनी था, और एमा ने उसका कैरेक्टर किया, बहुत खूबसूरत एक्टिंग की एमा ने। और जो बच्ची है वो छोड़ के चली जाती है माँ को, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में वो फील करती है, और वो समझती है कि अगर मुझे कोई नॉर्मल माँ पे अडॉप्ट करती तो उसको ये सब कुछ फेस ना करना पड़ता। और फिर लेटर ऑन ओनली लव मैटर्स जो एक किताब का नाम है, जो वो किताब वो पढ़ती है, जो सारा फराज का कैरेक्टर है वो स्ट्रगल करती है, वहाँ पढ़ाई करती है और एंड में एक बहुत बड़ी स्कॉलर बनती है। और वो
लेटर ऑन ये रिवील होता है फिल्म में कि ये किताब जो है वो उसकी अपनी माँ ने लिखी है जो अडॉप्टेड मदर थी, और उसके थ्रू सारी स्टोरी पता चलती है। क्या प्लॉट है सर, ज़बरदस्त। इतनी आपने इतने बार नाम ले लिया तो मैं उन्हीं के पास चला जाता हूँ। सारा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम यूके। थैंक यू सो मच सारा, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड. Playing a character like this, which is, if I can say, it's biologically challenged, if I'm not wrong. Biologically challenged character, and more than that, a taboo in our societies, in the Indo-Pak culture, in the subcontinent culture. How difficult was it to play a role like this? Well, I think, you know, there's so many aspects that come into it because, so my character, she's almost, you know, unlearning everything which she kind of ever knew. So there's so much mental struggles that go behind, and it's kind of, it feeds into, you know, her kind of everyday life, because how, you know, she's trying to learn like a new life, this new life as a woman, like what she's always wanted, and how do you make that normal when you know, it's all you've ever known. You've been raised as a boy, and how conflicting that is. And I think that's what, you know, that's the main point of exploration in the film, for sure. But it was really interesting. It was really interesting. It was very challenging though. You know, I think you can really start to empathize and understand the kind of struggles that, you know, this community go through, for sure. Absolutely. मैं सारा से मज़ीद भी बात करूं, लेकिन उससे पहले मैम, इसमें ब्रिटिश एक्टर्स भी हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स भी हैं. ये फ्यूजन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना मुश्किल था, कितना इंटरेस्टिंग था? मुश्किल आई थिंक नहीं था, इंटरेस्टिंग ज़्यादा था कि हमारे बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, अदनान जिलानी, बिल्कुल, कमल खान, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. वो लैंग्वेज जो हमने उनको दी वहाँ पे, जो लोकल लैंग्वेज थी, बहुत अच्छी तरह वो बोली उन्होंने. और वहाँ के एक्टर्स भी ये सब एक्टिंग एकेडमी से पढ़ के आए हैं, बहुत मंझे हुए एक्टर्स लगते हैं. और जब इनसे काम कराया गया, हमें इनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. तो जो भी रोल इनको दिया गया, उन्होंने उसके अंदर पूरी तरह फिट होकर बहुत अच्छे तरीके से, सारा डिड अ ग्रेट जॉब, अदनान जिलानी डिड अ ग्रेट जॉब, सो ऑल ऑफ देम were as good as you can expect. तो कामरान साहब, अब ज़रा रिलीज़ की बात हो जाए, एंड कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हम इसको देख सकते हैं? Will it be available on the OTTs as well? Yes, OTT is the time of today. It is. And now, as a filmmakers, as a director, producers, when we make films, we keep in mind all of these platforms, because film is not just for cinema, but also for multi-platforms. Like nowadays, people watching movies even on cell phone while traveling on, you know, in bus or maybe train stations. Even in flights, in the long flights, I've got downloaded movie, I'll watch it. That's right. So we just started a sales process, and we hired a sales company in London, and they are looking for the best options. As this movie has a historic position because of it is a first film in cinema history of having lead characters. Matthew Kenny is also one of the very important character who we missed to mention. And one more thing I would like to say, that when we did an audition with Sarah, we wanted her to cut her hairs. Okay. Now it's gone up. I'm so happy to see her hairs now. And she looks stunning, beautiful now. And we tried to make her a bit messy, and my instruction was for a haircut, that hairdresser, that make it as rough as possible. Okay. And that's a great thing for a good actor, that they do everything for the passion of acting. Absolutely. Sarah, I think it was really important though, right? Because it was just, I think we really needed to probably go to like the most authentic route as possible, especially to, you know, to really encapsulate this world that Sam lived in. And also it's interesting because the look of Sam, you know, when she came to the UK, it's just so, you know, I feel like you really vouch for her, because you can just see
the kind of situation that she came from. So it was quite an important part, I think. Absolutely. And Sarah, one more thing. Was it your first time working with other nationals like Pakistanis? Have you worked before? Or how was the experience working with the gentlemen and the lady sitting over here? Yeah, no, it was my first time. It was, and it was good. I mean, you know, this film kind of felt like it was over in like a day because we filmed this during COVID. I don't know if it was mentioned. And everything was so heightened. We were doing like 12-hour days sometimes. Yeah. So it almost feels like we had this lovely journey together, and then it just went because it felt like it was over so quickly. And obviously everyone's everywhere now, you know, the film's being promoted and everything. But it was, you know, it was for sure an experience that I was really, really grateful to be a part of. Absolutely. आखिर में मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस तरह के मौज़ूआत हमने रिसेंटली एक जो हमारे बड़े अच्छे अदाकार हैं शमून, उनसे भी हमने इंटरव्यू किया, और जो उनकी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी धोर्ज, उसके हवाले से भी हमने बात की, जो एक रियल लाइफ कैरेक्टर था जो कि कैनिबल था, और उस पर उन्होंने मूवी बनाई. Somehow or the other हमारी ये even this topic, these are the realities of the society. Somehow or the other हमारी सोसाइटी ही इन रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. एटलीस्ट नाउ वी हैव स्टेप्ड इन एन एरा कि जहाँ पे एटलीस्ट हम बात तो कर रहे हैं. ठीक है, आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को ना सिर्फ ये कि फिल्म बनाने से लेके और दिखाने से लेके, बल्कि लोगों के जहन में ये बातें समझाने तक कितना और मज़ीद टाइम लगेगा, या फिर आप समझते हैं कि इट्स बीन ऑलरेडी डन और हम उस एरा में हैं? मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ इस सोसाइटी का मसला नहीं है. अच्छा. जनरली पूरी दुनिया का मसला है. सिर्फ एक फिल्म बनाई है ऑस्ट्रेलिया ने अभी इस टॉपिक पे, जो लास्ट फिल्म बनी थी प्री डेस्टिनेशन, इस टॉपिक पे, जो कि उन्होंने ज़ोंबीज़ दिखाए इस तरह की कम्युनिटी को या इस तरह के लोगों को, जो कि उन्होंने बहुत ऑफेंड फील किया. और ऑब्वियसली करेंगे कि आप एक इंसान को गलत तरीके से पोर्ट्रेट करें, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे रियल कैरेक्टर्स होने चाहिए. ब्रिटेन की पहली फिल्म है ये, ओनली लव मैटर्स. उन्होंने आज तक कभी इस तरह का टॉपिक नहीं बनाया, और यही रिसर्च भी थी कि क्यों नहीं बनाया और क्या प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम वही है जो पाकिस्तान इंडिया में है, वैसे ही यूएस और अमेरिका में भी है, कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो या तो उनका हिस्ट्री नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिल्म मेकिंग इज़ अ कमर्शियल बिजनेस एज वेल. And the producers who like to know that how much money they will going to earn, अगर वो जो पैसा लगा रहे हैं अगर वो वापस नहीं आता, इस वक्त तो वैसे भी ओवरऑल पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा टफ टाइम था आफ्टर कोविड, लेकिन इन जनरल भी लोग उस तरह के सब्जेक्ट को हाथ लगाना में मुश्किल उनको होती है जिसका सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड ना हो. तो सब्जेक्ट्स आएंगे, रिसर्च थोड़ी सी होनी चाहिए, रिसर्च टीम्स वो हायर कर सकते हैं. हम दोनों तो खैर वैसे ही PhD स्कॉलर्स हैं, और हमारा काम भी यही है कि अच्छे सब्जेक्ट्स निकाल के लाना और डिस्कस करना और उसके ऊपर काम करना. और इस तरह की हमारी नेक्स्ट मूवी भी इसी तरह की एक बड़ी डिटेल रिसर्च के ऊपर आ रही है. राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. एंड सारा, थैंक यू सो much for the time. It was a pleasure talking to you, and best of luck for the movie, sir. Best of luck. Thank you for having me. और इसी तरह के जो हैं वो अगर मज़ीद इन पे मूवीज़ बनेंगी तो ही हम इन पे डिस्कशन करेंगे, और तो ही हम सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स और सोसाइटी के डिफरेंट लोगों को अपने जैसा समझेंगे. कोई भी किसी से कमतर नहीं है. इट्स जस्ट कि हमने यहाँ से कम सोचना शुरू कर दिया.